Okay, so let's start. Today's class, we are going to look at various kind of risks. So we have seen that earlier as well. So before we go on to look at, yes. मैम एक क्वेश्चन था मैम, जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे हाँ, मैम, उसमें एक जैसे आपने बताया था मैम, जैसे इन्फ्लेशन को भी अकाउंट में रख के मैम इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, है ना। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो मैम आज मैंने एक ऐसे पेपर में आर्टिकल निकला था मैम, उसे मैं पढ़ रही थी। तो मैम उसमें लिखा था कि जैसे इन्फ्लेशन जो चीज है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इन्फ्लेशन जो है कि जैसे गवर्नमेंट बताती है ना, इन्फ्लेशन जो सीपीआई करके गवर्नमेंट करती है इन्फ्लेशन का, तो मैम उसमें क्या है कि जैसे सबकी लाइफस्टाइल डिफरेंट होती है और करेक्ट सबका जो बास्केट ऑफ गुड्स का कंजप्शन डिफरेंट होता है। तो करेक्ट हम गवर्नमेंट के इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं चल सकते। अगर उसने करेक्ट, 5% बताया है तो किसी किसी का 7% भी हो सकता है, किसी का तीन बिल्कुल परसेंट भी हो बिल्कुल, हाँ। सकता है। बिकॉज इन्फ्लेशन जब निकालते हैं तो जैसे यू सेड सीपीआई निकालते हैं, मतलब इट इज यस टेकन आउट मैम। फॉर अ बास्केट ऑफ गुड, इट इज नॉट ओनली फॉर वन यस थिंग। मैम। या जैसे करेक्ट कि मैम डाइनिंग एट रेस्टोरेंट और सैलून, ये सब तो मैम करेक्ट, काउंट ही नहीं राइट, होता है। पर्सनल है, करेक्ट करेक्ट। यस मैम। तो उसमें दिया था कि इन्फ्लेशन तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब अब हमारे हाथ में नहीं है। और वो तो मैम जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारा, वो इन्फ्लेशन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर जैसे कि हमारा अगर 60% इक्विटी में है, इन्फ्लेशन जब लो है, तो ये नहीं कि जब इन्फ्लेशन हाई हो तो हम 100% इक्विटी में कर दें। या मैम ऐसे मतलब ऐसे चेंज नहीं करना हाँ, चाहिए हमें मतलब अपना। हाँ, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यू आल्सो हैव टू लुक एट द रिस्क प्रोफाइल ना, क्योंकि यस रिस्क मैम। प्रोफाइल के बिना तो यू कैन नॉट इन्वेस्ट। अब आपका जो हमने देखा, एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, फिर एक हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, राइट। तो यस मैम। स्ट्रैटेजी में बहुत चेंज आप नहीं कर सकते। यस मैम। तो हमने अगर बनाया है कि हम 60% डेट में ले 60% इक्विटी में लेके चलेंगे, 40% डेट में रहेगा, तो वी हैव टू ब्रॉडली कीप आवर इन्वेस्टमेंट इन लाइन विद दैट। ओके मैम। हाँ, तो तो मैम ये है कि पूरा इन्फ्लेशन पे बेस्ड ही हम अपना इन्वेस्टमेंट नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं बना कर रहे हैं सकते। कि हाँ। आइडियली वी शुड नॉट डू इट, बिकॉज फिर आपका रिस्क भी तो इंक्रीज हो जाएगा। यस मैम। तो यू हैव टू कीप इन सी, व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड इज कि अगर हम इफ वी कीप ऑल द मनी इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, then it would be a problem, because of inflation, you will not be able to मतलब your investment would not grow. तो इन्फ्लेशन को यू हैव टू कीप इन माइंड। ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन को आप बिल्कुल हटा सकते हैं, इन्फ्लेशन हैज टू बी केप्ट इन माइंड। बट हाँ, इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए यू कांट टेक मोर देन लाइक मोर रिस्क। यस मैम मैम। मतलब मैम अगर पूरा मतलब इन्फ्लेशन पे बेस्ड कर देंगे मैम, तो डाइवर्सिफिकेशन जो होगा मैम, उस पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा मैम। क्या क्या मैम चीज? जैसे कि मैम मीन्स मैम मतलब ये है कि डाइवर्सिफिकेशन भी मैम जरूरी है ना मैम, रिस्क को बिल्कुल मिटिगेट बिल्कुल करने के लिए। बिल्कुल, देन मैम अब डाइवर्सिफिकेशन पूरा भी यस मैम, देन मैम पूरा फोकस करना एक ऑब्जेक्टिव पे, तो ये तो फिर पॉसिबल होगा नहीं। नहीं नहीं, यस राइट, मैम। करेक्ट। यस मैम, तो वही डाइवर्सिफिकेशन मैम रिस्क मिटिगेट करेगा, तो मैम वो ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन मतलब पोर्टफोलियो में। हर चीज है एक्चुअली, कोई यस मैम। चीज कम इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वी हैव टू यस लुक मैम। एट एवरीथिंग, यू हैव टू लुक एट बट मैम इन्वेस्टमेंट का मतलब बैलेंस रिस्क मैम, उसको तो मिटिगेट करना होता ही है ऑब्जेक्टिव करेक्ट, मतलब राइट इन्वेस्टमेंट राइट करने राइट। वाले। यस मैम। एंड मैम रिटर्न होता है, बट मैम पूरी तरह मैम बेस्ड ऑन रिटर्न अगर कर दें, नहीं कर रिटर्न की सकते, नहीं यही कर है। सकते। यस मैम, बस वही है। गुड, तो अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हो अलग से, गुड। और मैम वो एक जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बताया था मैम आपको, वो मैम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था मैम। वो ये था कि उस दिन कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा मैम। उसमें ये था कि मैम वो कोई प्राइवेट जैसे बिटकॉइंस वगैरह है, वो सब नहीं है वही, मैम। वो हाँ, जो वो हम अपना नहीं है। लीगल करेंसी यूज करते हैं उसकी जगह डिजिटल करेंसी यूज कर सकते हैं, मतलब वही होगा फॉर्म में। बस वो डिजिटल करेक्ट। फॉर्म में लाने का मैम, लाने की तैयारी कर रही है आरबीआई, क्या सकता है। वही तो, वही मैं बता रही थी ना आपको कि आरबीआई हैज यस नॉट मैम। गिवन recognized क्रिप्टो करेंसी। और मैम ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारी ये डिजिटल ये जो ये प्राइवेट डिजिटल करेंसीज होती हैं,
मैम वो एक तरह से हम नहीं मान सकते हैं, Right. क्योंकि वो किसी की भी एसेट और लाइबिलिटी नहीं होती है, वो किसी के Right. बिहाफ पे एक्सचेंज नहीं होती है। इसीलिए Right. हम बैंक के ट्रांजैक्शंस में उसको अपना एसेट या लाइबिलिटी मान के हम नहीं उसको ले सकते हैं या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंक। Correct. Correct. Okay. Anything else? नो मैम। Okay. मैम Yeah. मैम ये जो यस मैम मैम जो आरबीआई का था ना मैम डिजिटल मैम करेंसी का मैम वो उसका बस यही तो है ना कि मैम जो करेंसी है उसका प्लेटफॉर्म मैम डिजिटल बस मतलब प्रमोट हाँ, करना है right. उसको। Correct. हाँ. यस मैम मैम क्योंकि मैम अगर हम लोग मतलब फिजिकल मनी का मैम यूज कम होगा तो मैम मैम डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो प्रमोट होंगे। मैम और मैम प्लेटफॉर्म शायद नहीं है, उसमें डिजिटल करेंसी ही आएगी, जैसे कि हमें अपनी नहीं फिजिकल डिजिटल करेंसी सोच सकते हाँ हैं, वैसे डिजिटल ही ये करेंसी तो डिजिटल आएगी बट करेंसी ही आएगी मैम, कोई ये हाँ, पर प्लेटफॉर्म अगर नहीं आप होगा। देखो वॉलेट जो है, डिजिटल वॉलेट जो है, वो भी तो एक यस तरह से मैम डिजिटल करेंसी ही है ना। आप यस अपने मैम मैम अकाउंट से पैसा डेबिट करके यू कीप इट इन योर यस अकाउंट, मैम राइट। यस मैम तो एक तरह से वो डिजिटल करेंसी तो हुई। मैम मैम वो मतलब एक अलग फिजिकल करेंसी है, क्योंकि अगर डिजिटल करेंसी मैम अगर डिजिटल होता तो मैम तो आजकल भी तो कितने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और चल ही रहा है मैम सब कुछ डिजिटली, तो मैम अलग से लाने की तो कोई जरूरत नहीं थी। आई थिंक ये जो लीगल करेंसी है उसको रिप्लेस करेगी जो डिजिटल करेंसी है, कि हम उसको भी जो ट्रांजेक्शन है जैसे बिटकॉइंस है मैम, कि हम्म। उनको देख के हम कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो हम्म। मैम उसी तरह से कुछ एक डिजिटल करेंसी आएगी शायद मैम, मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। ओके, हाँ, मतलब हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था यस कि मैम। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव फॉर क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि क्रिप्टो यस करेंसी का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई एसेट तो है नहीं उसमें, यस मैम। राइट। वी डोंट नो वेदर इट इज सेफ और नॉट। यस मैम मैम ये भी है कि मतलब डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल करेंसी। यस मैम जो इसका सेंट्रल जो यही है करेंसी। राइट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क। अब हम इन्वेस्टमेंट तो पूरा देख चुके हैं, एंड वी हैव सीन द डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट क्लासेस आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क, एंड सो लेट अस अंडरस्टैंड these risk in little bit detail, and also we will look at some case studies to find actually कि कहने को it is risk, but what effect it can have. It can have such an effect कि आपका बिजनेस पूरा बंद हो सकता है। So, so let us look at some case studies also for understanding risk. So we're going to look at market risk. When we were looking at volatility, we had seen standard deviation is a measure of risk. Then correlation, then value at risk. What is the total value you can lose? So what is the value at risk? Then what could be your expected shortfall, marginal value at risk, incremental value at risk, back testing, value at risk and standard deviation scaling, diversification and value at risk modeling. So basically we will understand risk in a little more detail. Now understanding risk is important because then you can minimize those risks. So we have seen this. What is market risk? Anybody, what is market risk? Inflation is market risk? No. मैम मार्केट रिस्क मतलब मैम प्राइस मतलब राइज होंगे या यस मैम फ्लक्चुएशन इन प्राइस। Yes. Yes. Yeah. मैम मतलब मेरा वही था Yes, कि ma'am. मतलब yes, ma'am. इन्फ्लेशन रिस्क तो मैम मेरे कहने का inflation मतलब risk है?
मैम मेरे कहने का मतलब इन्फ्लेशन में ये था कि जैसे इन्फ्लेशन होगी तो प्राइजेस घटेंगे और बढ़ेंगे, ये मेरा मतलब था इन्फ्लेशन से मैम यहाँ पर। Market risk is basically the risk of change in prices. It can be both ways. Even if it increase, and if you have to buy, that's a risk, and it decrease, you have to sell, again it's a risk. So we have been seeing this कि risk तो हर चीज में है, but when we are talking about financial management, we have to identify the risk, measure the risk, mitigate the risk, and then monitor the risk. So risk management is again a continuous process. Financial planning is all about risk management, no? Because if we know that if we don't take any risk, there'll be no return. But we cannot take, risk just like that. We have to identify, measure, mitigate, and monitor. So we know exactly what are we doing, what are the type of risk we are taking, and what is the value we can lose. And then we take a measure to mitigate it or to reduce it. मैम मिटिगेट का मतलब क्या होता है? Reduce, कम करना, mitigate का मतलब ओके। हल्का करना. So we have seen this in financial markets. People make money because of price uncertainty. Some people make money, some people lose money, and because of price uncertainty. So price uncertainty is the mechanism that allows profit or losses to be made. So market risk to define is a risk of losses in positions arising from movement in market prices. आज कौन नहीं आया है? Just a minute. Prachi, Samya, Shakti, Shubham, Swati. Who is not there today? Kalash is not there. और कौन नहीं है? शबनम. शबनम और कलश नहीं है ना आज? Okay. So market risk is the risk of losses in position arising from price movement. Now yes. मैम हम लोग इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को क्यों नहीं मतलब उससे कर सकते हैं, मतलब मार्केट रिस्क में? मैम हो सकता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों से मार्केट रिस्क मतलब? ये अलग रिस्क है. इन्फ्लेशन अलग रिस्क है. इन्फ्लेशन भी रिस्क है. I'm not saying inflation is not a risk, but there are two different risks. Yes, ma'am. Market risk is the risk is movement in prices. तो इन्फ्लेशन में तो सिर्फ प्राइस हाई होगा, और जब प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो हम कमोडिटी प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं. सो अगर आप देखो तो इन्फ्लेशन कमोडिटी प्राइस को ज्यादा हिट करता है ना. यस मैम. राइट. तो आज अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो टाटा पावर का शेयर भी महंगा हो जाएगा, ऐसा तो कोई रिलेशन नहीं है ना. नो मैम. यस मैम. है ना. So we are talking about the prices of the security here. We are not talking about the prices of the commodities. So inflation actually measure the risk, the change in prices of various commodities or consumer goods, right? When we are talking about market risk, we are specifically talking about the price of the market of a security. So agar your understanding is correct in the sense that inflation is a reduction in price, but price of what? The market price we are looking at is the price of security. So the market price can be direct or indirect.
तो डायरेक्ट प्राइस क्या है, कंपनी मैम का बैलेंस शीट आया, यस मैम मैम हाँ ऐसा कोई वो भी तो ऐसा कोई रिलेशन भी नहीं है कि इन्फ्लेशन अगर हुआ तो मार्केट प्राइस भी मैम इंक्रीज करेंगे। करेक्ट, वही तो कह रहे हैं, उसका यस कोई मैम। प्राइस, उसका यस कोई मैम। रिलेशन नहीं है। यस मैम। So now the share prices as the security prices can be affected, uh, something which is direct, that means फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं, अगर फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा है तो मार्केट प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, फाइनेंशियल एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है तो मार्केट प्राइस गिर जाएगा। सो द affecting the things affecting the price of the security can be direct, which is the health of its balance sheet, sales, its vision and strength of its management team. It can be also indirect. Indirect मतलब कोई भी पॉलिटिकल रीजन है या इकोनॉमिक इवेंट है या पेंडेमिक है, ऑल दीज विल आर इनडायरेक्ट reasons for the security prices to be affected. Also interest rate levels, economic events, economic sector sentiments and environment effect. तो ऐसे आप पढ़ते हैं ना कि आज सेंसेक्स बढ़ गया, आज सेंसेक्स घट गया, कोई न्यूज आए तो सेंसेक्स बढ़ गया, कोई न्यूज आई तो घट गया, राइट? So these are all indirect ways of affecting the security market. Now we have to understand the market risk. We cannot eradicate it. That means उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, but we need to understand it so that we know exactly what needs to be done. So if we are thinking of getting some returns in the market, we'll have to understand the risk and then work accordingly. So the aim is not to eradicate it, but to understand and quantify it. The method and tools used for measuring market risk have become very advanced. So first step is to identify the risk. Different kind of securities will have different kind of risk. If you look at the fixed income instruments, they will have more liquidity risk. Volatility risk इतना नहीं होगा क्योंकि फिक्स्ड इनकम के प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, बट लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, especially if the interest rates have risen, then there's a high liquidity risk. That means it will be difficult to sell them. Currency risk can be the risk in international, any international investment, any international investments, exporters, importers will have currency risk. Now volatility risk, volatility risk जो है वो हमने देखा है कि it is more relevant to equity. Volatility is a measure of the change in prices. Okay. Basis risk is the risk in derivatives. So आपने if the fund manager has not done proper hedging, then they can be a basis risk. Then interest rate risk, more relevant to your fixed income instruments. Both if the interest rates rise or the interest rate fall, both are risk. Commodity risk, जिस टाइप की commodity क्योंकि physical है, so it will also have physical risk. And equity risk, risk associated with the equity of the company. So different kind of securities will have different kind of risk. So हमने देखा financial securities क्या हो सकती हैं, fixed income securities हो सकती हैं, then equity shares हो सकते हैं, right? Derivatives हो सकते हैं. So these are certain kind of risk, and all different kind of investments will have, securities will have different kind of risk. So volatility risk, we know the risk of price movement that are more uncertain than usual, affecting the pricing of the product. Affects all price instrument, but option in particular face this risk. And liquidity risk occurs in market due to lack of supply or demand
shortage of money market. So liquidity risk is basically not being able to trade in a market or obtain a price on a desired product when required. That is a liquidity risk. So inability to convert your security into cash is your liquidity risk. Currency risk is adverse movement in exchange rates. Affect any portfolio or instrument with cash flows denominated in a currency other than the base currency of the business. Then basis risk occurs when one risk exposed is hedged with an offsetting exposure in other instruments that behave in similar but not identical manner. So basically it's a derivative thing. So you try to hedge. Hedge means protect your risk. But if you have not done it correctly, then the basis risk arises. Interest rate risk is a risk that an investment value will change due to a change in absolute level of the interest rates. And it is actually directly impacts fixed income securities and derivatives. Because your मैम yes. मैम बेसिस रिस्क एक बार बता दीजिए फिर से. कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये इतना डेरिवेटिव का है वो बहुत ज्यादा वी विल नॉट हैव टू डील विद डेरिवेटिव, और अगर डील करना पड़ेगा तो अभी इससे भी बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी. बट बेसिस रिस्क इज बेसिकली अ रिस्क इफ द फंड मैनेजर हैज नॉट हेज्ड हिज पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली. हेजिंग कैसे करते हैं हम? डेरिवेटिव्स. हेजिंग का क्या मतलब है? प्रोटेक्शन, राइट? यस मैम. तो अगर ढंग से प्रोटेक्ट नहीं किया है अपना पोर्टफोलियो तो फिर सकता है, या ज्यादा कर दिया है, ज्यादा में भी प्रॉब्लम है बिकॉज आपके रिटर्न्स कम होंगे. और अगर आपने प्रॉपर हेज नहीं किया है या प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं किया है तो बेसिस रिस्क है, वो डेरिवेटिव से रिलेटेड है बेसिस रिस्क. ओके मैम. So the risk that is investment value will change due to change in absolute level of interest rates and directly impact the fixed income securities and the derivatives. Then commodity में भी प्राइस रिस्क हो सकता है. कमोडिटी हमारी जैसे हमने देखा सॉफ्ट कमोडिटीज हो सकते हैं और हार्ड कमोडिटीज हो सकते हैं लाइक मेटल्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. So most commodities are traded in market where the concentration of supply in the hands of few supplier can magnify price volatility. Commodity prices generally have higher volatility and higher prices discontinuities. Equity price risk, we know. We have seen that returns on equity can be generated in two forms: capital growth and dividend distribution. Right? So if the company does not pay a dividend or the share price does not rise or it falls, that is a risk. So market risk is a risk generated from changes in prices of the security. ये हम पहले भी देख चुके हैं, systematic risk and unsystematic risk. Systematic risk is a risk with the entire system, and unsystematic risk is risk with a particular kind of security. And unsystematic risk can be diversified. They can be reduced by diversification. So unsystematic risk inherent to stock or company can be diversified. Systematic risk arising from market as a whole cannot be diversified. And here we look at the most common way of measuring risk is value at risk and standard deviation. Value at risk means कितना risk है हमारी, what is the maximum we can lose, or what is the baseline we are looking at for that risk. So diversifiable risk, also known as unsystematic risk, as the name says, these risks can be diversified. So diversifiable risk, the risk that can be diversified away, is the relating to specific or particular investments. This kind of risk is called non-systematic or specific risk. For example, a company might lose a major customer, or it might suffer a loss in its shares of sales in its particular market. Such events can adversely affect the share price of that particular company. Then systematic risk. Systematic risk cannot be diversified away by holding a range of investment in that particular market. This kind of risk is also called non-diversified risk or market risk. इसका कुछ कर नहीं सकते, because अगर कुछ भी
any event which happens which is not in your hand. So for example, China rages a war against India, again it will affect the market. किसी पॉलिटिकल लीडर को मान लो assassination हो जाता है, again it will affect the market. So you don't have control, it is very unpredictable and not much can be done about these risks. So systematic risk cannot be diversified away by holding a range of investment in the particular market. The kind of risk is also known as non-diversified risk or market risk. This kind of risk is also called non-diversified. Yeah. For example, during a global recession, all share prices may be falling and returns declining. Then a wide and diversified portfolio of shares is very likely to fall in line with the wider market. The risk of this happening affects the whole system or the market. So we have seen this in the recent past. Last year, जैसे when the pandemic hit, it affected the entire world, and the share prices of everywhere in the world were affected. So not only that the Indian share market suffered, all share markets suffered. All share markets saw the same fate, right? So this was undiversified risk. You can't do anything about it. So ये uncertainty भी है. तो कई लोग आपको people will tell you stories that I have made so much money out of shares. That was good time. Probably they were able to do it, but there is always risk, and risk is unpredictable. इसका कुछ कर नहीं सकते. Who in 2019 who would have thought of the pandemic? किसी ने नहीं सोचा था ना कि इस तरह से भी होगा कि लॉकडाउन हो जाएगा, पूरी तरह से फैक्ट्रीज बंद होंगी, इकोनॉमी विल कम टू अ स्टैंडस्टिल. नोबडी वुड हैव थॉट ऑफ इट, बट इट हैपेंड. सो इस टाइप के रिस्क इनहेरेंट है. आज को ये है, कल को कुछ और हो सकता है. वी डोंट नो. These are certain things which we have never seen. So risk is anyways a measure of uncertainty. So there are many uncertainty in investment. So the only thing you can do is probably try to recognize them and take some actions to minimize it. They cannot be totally eradicated or they cannot be done away with. Risk और return दोनों साथ ही चलते हैं, तो थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा. और रिस्क and obviously we can't know all the risk and we can't make the risk zero. We'll just have to work off minimizing those risks. तो ये हमने देखा, systematic risk can be unsystematic risk or diversified risk can be reduced by diversification, not keeping all eggs in one basket. तो ये हमारा financial financial planning का भी एक subject था, where we know that we cannot keep all the money in one particular kind of investment. We have to diversify. तो जब हम लोग portfolio asset allocation करते हैं, तो ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि our assets are properly diversified. So we keep some money for liquidity, we keep some money in fixed income instruments, we keep some money in depending on the risk profile of the customer in equity, right? So we diversify the investment portfolio. So this is what it is. This picture shows that you should try to keep your money in different kind of assets, and liquidity is also a thing which needs to be taken care. ऐसा नहीं कि आपने सारा पैसा invest कर दिया और liquid में आपके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि liquidity also illiquidity is a risk. So liquidity risk भी है कि you don't have enough assets to be converted into cash immediately, right? So we have to even look at that. So you can have different kind of asset classes. जो अगर किसी को अभी तक asset allocation का मतलब नहीं समझ में आया था, इससे आप समझ सकते हैं. This is what is asset allocation. You look at the financial condition of the customer and then see where the money would be kept. So it can be kept, it should be kept in
various different kind of assets, which can be deposits, annuities, shares, bonds, funds, trusts, properties. So this is what asset allocation is. So I hope by now systematic and unsystematic risk should be clear. Unsystematic risks are risk pertaining to a certain kind of security, and they can be mitigated by diversification. However, systematic risk is a risk for the entire system, and there is not much we can do. So systematic risk, such risk stems from broad equity market movement or market risk, which in turn mainly derives from changes in economic factors. No matter how well deserved the portfolio, cannot be diversified away. So systematic risk, you can't do anything. Unsystematic risk, as we've seen, also called diversifiable risk or company specific risk. That is risk that is peculiar to an individual company, or you can say individual, an asset class also. So if you are taking only one kind of asset class, obviously your unsystematic risk is high, but if you diversify into various asset classes, your unsystematic risk will be low. So unsystematic risk can be diversified by investing in different kind of securities, also different kind of companies. These are called company specific risk. That is risk that is peculiar to an individual company, causing its shares to move independently of general market movements. Unsystematic risk can be diversified away by holding a large number of securities operating within different industry sectors. So yeah, this we have seen even in terms of portfolio asset allocation. We have to avoid concentration risk, and the systematic risk will reduce itself. Okay, so tell me, what is this kind of risk? First, surge in sales due to new customer acquisition. Is it systematic risk or unsystematic risk? क्या है? हम repeat कर दीजिए question. सामने लिखा तो है आपके, कौन सा रिस्क है ये? पहला वाला. Unsystematic. It is unsystematic, right? Because it is affecting only a particular company. Change in tax reforms. Ma'am, systematic. It's a systematic risk. Non-systematic. Correct. Kim Jong launching ballistic missiles. Ma'am, systematic. Systematic, because it will affect the entire market and the entire world. Right? Fall in crude prices causing fall in raw material price for paints. Ma'am, unsystematic. This is unsystematic. Unsystematic. Only concerning Yes, paint. ma'am. It's only concerning paints, so it is unsystematic. Right? Now, correlation and variance are way to measure the risk. So correlation is a degree at which two variables move together. So for example, ice cream and shark attacks. Are they correlated? Are they correlated? They are not. There's no correlation, right? Yes, ma'am. No correlation. They are independent. It doesn't in any way make a difference how much ice cream sales you're making and how much people are attacked by the sharks. So both ice cream sales and shark attacks increase when the weather is hot and sunny, but they are not caused by each other. So they are caused because, in good weather, people will go to the beach probably, and probably they'll eat ice cream and go into the water and maybe attacked by sharks. So actually there is no correlation between the two of them. So when we are looking at
investment, we have to look at more asset classes which are not correlated. Because if one asset class is not doing well, the other asset class should remain unaffected. So if they are correlated, then if one asset class does bad, the other will also do bad. So correlation focuses on direction but not magnitude. So correlation can be positive, it can be negative also. So for example, we've seen that there is a correlation between the price of gold and equity. That's a negative correlation. Like in case equity prices rise, gold prices fall. Okay. So so correlation can be either 1 or -1 or +1. But correlation is independent of scale. Correlation only hold between variables of same size. So correlation focuses on direction but not magnitude. So here if you look in, so correlation again, as I was telling, can be positive or negative. So if you look at these charts, it will show you how it is. So for example, if you look at this chart, this is perfect positive, like both are moving in the same direction. This is perfect negative because one is moving up, the other is moving down. These are scattered. That means they are no relation. So this is again positive because they are moving in the same direction. So this is a strong positive because most of the time they are moving in the same direction. The other one is more distributed or more scattered. So weak correlation. Then here again, they're moving in the same line. So strong negative and more dispersed. So weak. So ये सब formula है वैसे. You if you are going into banking, relationship management, wealth management, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. It's just a formula. This is basically for investment managers and fund managers, the people who actually do it. You will be required to distribute it rather than doing it yourself. So ये सारी चीजें you can have an idea, but practically you might not use it. So this is the formula: correlation, covariance, standard deviation, and return on asset. So obviously we are looking at two different assets. So the correlation between two different assets can be found out by this formula. So covariance, another way of measuring risk is covariance. It measures the direction in which two variables move. It can be negative covariance or positive covariance. So again, you have the formula for covariance. How do you measure covariance? I don't think it is very relevant to what we are studying or what jobs we are preparing ourselves for, but still. So this is also a measure of risk. Disadvantage is that it's not very easy to interpret due to measure in unit. It can take any value. Then you have seen two things. We have seen correlation and covariance. Relation is same direction, variance is very different direction. So correlation is straightforward to compute, easy to interpret, applies to any type of objective variable. Disadvantage, the result may not make economic sense, relies on availability of accurate and long historic data. Historic correlation may not hold in future. So ये हमने तो देखते आए हैं कि what has happened in the past might not happen in the future.
are certain ways of measuring risk. Market risk. Market risk is all about volatility, right? So we can measure it by standard deviation. जो हमने म्यूचुअल फंड में भी देखा था. What is standard deviation? What is standard deviation? Anyone? Standard deviation क्या है? Are you guys there या सो गए हो? मैम रिस्क को मेजर करने का एक मेथड है। हाँ, नहीं, रिस्क को मेजर करने का मेथड तो है, बट स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या? ये एज अ स्टैटिस्टिकल टूल आपने पढ़ा होगा ना स्कूल में. व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या मतलब है? अरे नोबडी. स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या मतलब है? हाँ वो जो वैल्यूज में जितने भी वेरिएशंस और हाँ, सो इट इज द डिविएशन फ्रॉम द मीन. यस मैम, जो मीन निकालते हैं जितने भी उनके वेरिएशंस होते हैं वैल्यूज में, जो भी हम उनको मैम देते जो हैं। अमाउंट जो यस मैम वैल्यूज दिया होता है उसका मैम जो मतलब अमाउंट होता है वो कितना क्लोज मतलब अमाउंट है जो मीन आएगा और कितने अमाउंट उससे मतलब हाउ फार इज इट मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी कर फ्रॉम द रही है। मीन. यस मैम, यस मैम, यस मैम। सो ऑब्वियसली आई टेल यू, रिस्क जितना ज्यादा डिविएशन होगा उतना ज्यादा रिस्क है. तो यही अब अभी हम लोग बात कर रहे थे डिविएशन फ्रॉम द मीन. स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिविएशन फ्रॉम द मीन. So deviation is measured against the mean. Assume normal distribution, generally calculate on annual basis. So measures the deviation of the time series over a given period of time. तो ये हमने स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस दोनों ही देखा था when we were looking at measuring the risk of mutual fund. So standard deviation और variance दो चीज होती है, and variance is nothing but square root of standard deviation. और आप like rather than doing this calculation you can use the Excel function. Excel function में if you remember, just a minute, let me show it to you again. So हम लोग यहाँ पे इंसर्ट फॉर्मूला करके obviously standard अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होगा we will have some series of data. We can type in here and then insert a formula, financial formula, and yes, but it does not have standard deviation. Oh, I thought it would have the formula, mathematical and trigonometry. Statistic. Okay. हाँ, so standard statistical data में, because basically it's a standard deviation is a statistical term. इसमें standard deviation we can use to calculate.
ये सब चीज की जरूरत आपको तभी पड़ेगी अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं या आगे CFP या CFA करना चाहते हैं. अभी तो जस्ट नोइंग theoretical thing is okay. When you can calculate it for one security, you can calculate it for the entire portfolio as well. What is the difference? What is the difference between portfolio and individual security? कुछ डिफरेंस है या सेम मैम है? पोर्टफोलियो हैव मैम पोर्टफोलियो यस मैम मैम पोर्टफोलियो में मतलब बहुत सारी सिक्योरिटीज के बारे में होता है और इंडिविजुअली में एक सिक्योरिटी के बारे में होता है. So standard deviation can be calculated either for one security, it can be also calculated for the portfolio. So you can calculate the portfolio standard deviation. Can you calculate this? अब इसमें वेटेज एवरेज निकालना पड़ेगा आपको. So इन दोनों सिक्योरिटी और A और सिक्योरिटी B में कौन सा ज्यादा रिस्की है? स्टॉक A और स्टॉक B? Stock B. मैम बी. Stock B is riskier ma'am. because the Stock B. standard deviation is higher, right? But thankfully Yes, उसका ma'am. weight जो है कम है, right? So for example अगर 100 rupees हमने इन्वेस्ट किया है तो 60 would be in stock A and 40 would be in stock B, right? नो वॉलेटिलिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. वॉलेटिलिटी का मतलब है कि कितना मूव करेगा. अगर 2% की वॉलेटिलिटी है तो इट कैन मूव 2% इन एनी डायरेक्शन, राइट? तो $60 का 2% 1.2 हुआ. नाउ द शेयर प्राइस कैन मूव एनीथिंग बिटवीन 60 माइनस 1.2 and 60 plus 1.2. So standard deviation of an asset is 2%, that is $1.20, and we can be 95 chances. अगर हम लोग 95% ले रहे हैं, that end of the day the asset price will be 60 minus 1.96, like so 57.65, and it can go to 62.35. basically standard deviation volatility है ना, range है. ये हमने म्यूचुअल फंड में भी देखा था, range है. So standard deviation basically can go in any direction. It can be positive, it can be negative. So if you look at volatility, it is a measure of change in the price of the security. So assume that daily returns are independent with the same variance of return over T time. Standard deviation of returns T, then this is very confusing. Basically it means ki your volatility is directly dependent on, is measured by your standard deviation. Volatility is a change, and standard deviation will tell you up to what it can change. So when the fund managers are looking at this, the risk manager focus on variance rather than volatility. So variance rate is equal to volatility square. तो वेरिएंस क्या है? नेगेटिव भी हो सकती है. वॉलेटिलिटी आपकी वॉलेटिलिटी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, बट क्योंकि वेरिएंस उसका स्क्वायर है, सो इट विल बी ऑलवेज बी पॉजिटिव.
So obviously it is calculated on the historic data. So risk manager calculates volatility from historic data. They also keep track of implied volatilities. There is a model for calculating this. So in the Black-Scholes-Merton model, these people would have probably made that model. For option pricing, one variable that cannot be observed in volatility of the underlying asset prices. Implied volatility of an option calculated by setting market price equal to the model price. So they are talking about how do you see, if you look at the working of derivatives में आपको forward calculate करना होता है ना, like because your transaction is happening is not settling today, it will settle sometime in future, so you will have to calculate the price based on the volatility, right? तो ऑप्शन का जो प्रीमियम देना होगा that would be on the model price. Now ये सब बाहर के indexes हैं. तो stock exchanges basically publish the volatility also, and we can look at these to know what is the volatility of a certain stock. So basically the fund manager is trying to look at the volatility index. So the VIX stands for the volatility index. So it is calculated by another agency. Not very relevant to, again, what you're going to do, but basically in case you want to go into portfolio management, probably you will use it. This is just information. Nothing to explain here. So more the index, more is the risk. So if you look at hit a record of 80 in October and November 2008 after bankruptcy of Lehman Brothers. So Lehman Brothers के ऊपर हमने एक case study भी की थी. Anybody remembers what caused the fall of Lehman Brothers? Yes, ma'am. हाँ, क्या था? I know ये topic ऐसा है थोड़ा सा boring सा, but क्या करें हम, as a curriculum we have to read it, so we have to go through it. Anyways, हाँ, Lehman Brothers का क्या था? मैम उन्होंने उन लोगों को भी वो जो लोन्स के जो सीडीओज बना के मैम प्रोवाइड कर दिए थे मैम, जो लोग पे नहीं कर सकते थे मैम, जिनके पास, और जो हाउस मैम जो होम लोन्स ले रहे थे, जो लोग हाउस लोन मैम, उसकी फुल वैल्यू में उन्होंने लोन प्रोवाइड कर दिए थे. करेक्ट. बिना किसी इंफॉर्मेशन के बैकग्राउंड चेक किए या उनकी इंफॉर्मेशन लिए मैम. करेक्ट, राइट. और फिर क्या हुआ था इसकी वजह से? तो मैम इसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत लोग फिर जब जैसी इंटरेस्ट रेट बढ़ गए मैम, उन्होंने ऐसे रेट पे फ्लक्चुएट मैम, वो जो रेट पे दिए थे कि पहले कम थे इंटरेस्ट रेट और बाद में बढ़ गए, तो मैम लोग पे नहीं कर पा रहे थे, तो लोगों ने फिर पे करना बंद कर दिया, डिफॉल्ट हो गया. तो मैम बहुत सारे जो क्या कहते हैं मैम, जो होम्स थे मैम वो ऑक्शंस में आ गए. फिर ऑक्शन इतने सारे आ गए कि मैम उसका जो प्राइस था वो कम होने लगा मैम. यस मैम, गिर गया एकदम से. करेक्ट, करेक्ट. तो इन लोगों को बहुत नुकसान हुआ था. लेमन ब्रदर्स को नुकसान क्या हुआ था? दे हैड टू क्लोज डाउन. यस मैम. तो लेमन ब्रदर्स बंद हो गई थी इसकी. मैम पूरा यस मैम. मैम सारा कंसंट्रेशन मैम हाउसिंग लोन्स पे था एंड मैम पूरा रियल एस्टेट बेस्ड था. करेक्ट. And it led to downfall of Lehman Brothers. So इसीलिए रिस्क का अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में रिस्क की हम बहुत बात करते हैं, बिकॉज यू हैव टू लुक एट द रिस्क एंड लुक एट द वे ऑफ मिनिमाइजिंग इट, बिकॉज दिस काइंड ऑफ रिस्क कैन आल्सो कॉज द बिजनेस टू शट डाउन, और हुआ है इन द पास्ट. इन द पास्ट मेनी बिजनेसेस हैव closed down because they did not anticipate the risk properly.
So value at risk, this was concept was developed in 1980s, and obviously कुछ बड़ा scam हुआ होगा, बड़ा नुकसान हुआ होगा, इसीलिए these kind of things came in. So it is a manager's sleep at night number. Now हमने देखा है कि हमारा जैसे if you look at the currency market, the currency market is a 24-hour market. तो आपका जब ऑस्ट्रेलिया में दिन खत्म हो जाता है तो आपका यूएस काम करना शुरू करता है. अब ऑस्ट्रेलियन मैनेजर तो अपना काम कर कर आके सो गया. He doesn't know what is going to happen, right? So value at risk basically talks about the risk manager's sleep at night number. कितना रिस्क वो ले सकता है अगर मान लो मार्केट एकदम डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया. So what is the maximum risk he can take? So widely used to express the maximum loss that can occur with specified coincidence over a specified period. So if a portfolio 1 week VAR is stated at 1 million in 95 weeks out of 100, then the portfolio is predicted to lose less than 1 million at the 95% confidence level. So the maximum money they can lose is 1 million. So value at risk is widely used to measure and quantify the level of financial risk within a firm or investment portfolio over a specified time frame. So to minimize the risk, the manager has to set value at risk limit कि इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे. ऐसे जैसे आप लोग I don't know how many of you play, but जब दिवाली में आप लोग घर में ताश वाश खेलते हैं तो आपका लिमिट नहीं होता कि भाई इससे ज्यादा हम नहीं हारेंगे. हमारा मैक्सिमम हमने रख दिया है कि हम बस 5,000 तक खेलेंगे, 5,000 से ज्यादा हारेंगे, उसके बाद हम खेलना बंद कर देंगे, राइट? तो दैट इज व्हाट सेटिंग ऑफ लिमिट कि इससे ज्यादा वी विल नॉट not take risk. So you set value at risk limits, monitor value at risk, and अगर बहुत ज्यादा उससे ऊपर हो रहा है then escalate, मतलब tell it to the higher authorities. So value at risk provides a statistical appropriation of potential loss. Can be readily understood by non-risk managers. मैम Yeah. बोलो. वैल्यू रिस्क का मींस मैम है कि कितना, यस मैम, कितना मैक्सिमम रिस्क हो सकता है ये. हाँ हाँ हाँ. ओके मैम. Okay. So, however, disadvantages does not specify how bad the situation could get. Gets difficult to calculate with large portfolio. Only as good as inputs and assumptions. So ये हमारा कुछ हमें फ्यूचर का प्रेडिक्शन, जैसे हम लोग वैल्यू एट रिस्क, जैसे हम लोग कई लोग पंडित के पास जाते हैं ना, ओके, तो पंडित भी प्रिडिक्ट कर सकता है. ही माइट नॉट बी 100% श्योर, राइट? तो ये भी वही है. So these are three different approaches to for calculation of value at risk: historic simulation, parametric approach, and Monte Carlo simulation. So Monte Carlo simulation is one kind of method developed. So as the name suggests, historic simulation uses historic analysis of portfolio risk factors, values to estimated risk exposure in future. So compute historic returns over the look back period, compute simulated levels using historical returns and base price, compute profit and loss as difference between historic and base situation limited, derive percentile loss based on confidence interval. So basically you can look at it is a mathematical calculation
of this is what the risk is. अब ये अगेन 100% श्योर नहीं है, इसने हिस्टोरिक डेटा लिया है कि ये वॉलेटिलिटी है, इस वॉलेटिलिटी पे हमारा ये इतना मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्रेडिक्शन है, अगेन जैसे हम लोग प्रेडिक्शन, आपका मौसम का भी प्रेडिक्शन होता है और गेम के रिजल्ट का भी प्रेडिक्शन होता है, लाइफ का भी प्रेडिक्शन होता है, बट वी ऑल नो कि दे आर नॉट राइट 100% ऑफ द टाइम। ऑल्सो इफ यू नो, अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी से बात करेंगे तो बोलेगा नहीं ज्योतिष विद्या सिर्फ गणित है, सो दिस इज ऑल्सो मैथ्स, दे आर यूजिंग statistical tool to calculate the risk. Now this might be correct, might not be correct, it will depend on the how the market would move, but this will give you a basic idea as to how much money can I lose. Then you have the Monte Carlo simulation. They developed a model for future stock price returns and running multiple hypothetical value through the model to obtain a distribution of return values. So Monte Carlo simulation, the process of reducing random numbers in a controlled fashion, and it just a minute, just give me a moment. I'm sorry about it. Okay. So yeah. So Monte Carlo simulation. Again a simulation. Now इस सब चीजों को देख के ना घबराना मत. You know, ये हम देख रहे हैं, but अगर इसके ऊपर आपको काम करना होगा, तो this is not enough. You know, we are just looking at it as a, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये भी चीजें हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में. These are also methods of doing it. But as of now, the job profile we are preparing you for will not require this. So don't get too much hassle कि अरे मुझे तो पता ही नहीं है कैसे कैलकुलेट करना है, इसका क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे. ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं आपसे. We are just giving you a taste of this just to widen your horizon कि ये चीजें भी होती हैं. अगर आपको इसमें जाना है आगे तो ये चीजें भी आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी. अभी हम लोग वी आर जस्ट टचिंग अपॉन. तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा हो. It is perfectly fine. Just keep in mind that there are ways whenever we are looking at managing this. We do it by some mathematical calculation, right? तो ये हम जिंदगी में भी करते हैं. In real life also we do. I don't know how many of you believe and इनके पेरेंट्स बिलीव करते हैं, बट अगर आपने देखा होगा कुछ फैमिलीज में होता है कि जब बच्चों को देखते हैं, बच्चों का हॉरोस्कोप बनवा के दिखवाते हैं पंडित को कि ये बता दो ये किस में जाएगा, मोटा मोटा एक रीजन दे दो. तो पंडित अपना कैलकुलेट करके बता देता है. अब वो सही होगा ये गलत होगा ये पता नहीं, बट एक फ्रेम मिल जाता है, ठीक है. अब ये जो रिस्क है, ऑब्वियसली इट इज नॉट एज अनसाइंटिफिक एज जन्म पत्री. कुछ साइंस बिट है इसमें, हिस्टोरिक डेटा है, बट as we have seen historic data is not 100% correct.
but the probability of historic data or historic performance repeating itself is higher in these kind of simulations. So these are what it is. So these are ways to calculate how much I can lose or what is the risk based on the data. That is what it is. So, and uses them as value in equation is known as Monte Carlo simulation. So this is also one way of looking at value at risk. So the Monte Carlo simulation looks at value of the portfolio today. Sample once the multivariate distribution in the delta. Use the delta to determine market variables at end of the day. Revalue the portfolio at end of the day. So basically they looks at simple terms में अगर इसको देखो इसको पढ़ के कंफ्यूज मत हो. बेसिकली क्या है कि आज क्या मेरा वैल्यू है, उसमें कितना चेंज हुआ और मेरा वैल्यू एंड ऑफ द डे क्या होगा. दैट इज व्हाट इट इज. बेसिकली इट इज ट्राइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज द रिस्क. तो अगर आप देखो, इफ यू लुक एट द वर्किंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, इट इज वेरी अनसर्टेन. आई कैन प्रिडिक्ट सर्टेन थिंग्स, आई कैन प्रिडिक्ट. तो हम फंडामेंटल एनालिसिस जब करते हैं तो कंपनी का परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट. दैट इज द मैक्सिमम थिंग आई कैन डू. वी कैन नॉट predict any unforeseen circumstances. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम ये कैलकुलेशन करते हैं टू नो कि मेरा रिस्क क्या होगा, आज के डेट में मेरा रिस्क क्या होगा. दैट इज व्हाट इट इज. So repeats many times to build up a profitable probability. So again, look at the word probability. So it is looking at the probability. What is the probability of this thing happening? So probability distribution of delta P. Variance value at risk is the appropriate fractile of the distribution times square root of n. So basically it tells you what is the worst which can happen. So these are what traders do. Traders जो आपके स्टॉक मार्केट में हमने देखा ना, जब हम लोग जब फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जब हम इक्विटी सिक्योरिटीज देख रहे थे, तो हमने देखा कि इक्विटी. Ma'am, from 2:05 I had my English presentation, so that's why I'm late for 2 minutes. Okay, no Sorry, issue. ma'am, for that. So you have joined back or you have to go again? No, ma'am, I have joined back. Ma'am, हो गया ma'am presentation. Ma'am, 2 minutes का ma'am था. Ma'am, presentation ma'am देना था. Yes, ma'am. Actually, ma'am, assignment submit हो गया था. बस ma'am को कुछ questions था, ma'am वो करना था. बस 2 minutes का उसमें speak out करना था, ma'am. I was wondering कौन चला गया. Yes, ma'am. मुझे लगा कि बहुत बोरिंग टॉपिक है, इसलिए कोई भाग गया. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, actually, ma'am, वो urgent था, ma'am. उसमें marks मिलना था, so ma'am इस वजह से. अच्छा, कलश और शबनम का any news? No, nobody knows why they are not there. मैम कलश की एग्जाम्स चल रहे, मे बी शायद मैम उस वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाई है. Okay. Okay, so traders calculate risk measures such as delta, gamma, and vega to quantify and manage risk of their positions, that is exposure to their position to market variables such as interest rate, equity indices, and commodities. So basically, if you look at buying of securities is not buying any other physical product. It has a lot of science or mathematics attached to it. Right, so that is what the traders do the calculation to find out whether they should invest in a certain share or not, a certain security or not, and what is the risk they have. Obviously, risk को manage करना है उनको, इसलिए उनको पता होना चाहिए कि क्या risk है. So although a large number of delta, gamma, etc. produced every day, they are only useful to traders.
So senior management and regulators need only one number that will tell them the total risk to a financial institution is exposed. So that is the value at risk. And expected shortfall attempts to provide a single number to summarize the total risk of the firm portfolio. So you know the senior management does not have much time. They only need to know exactly what are at risk. So that is what is given to them. So ये सारे investment banking firms ही देखते हैं, are people who are trading in shares. So value at risk was pioneered by JP Morgan, widely used by corporate treasurers, fund managers, and financial institutions. Value at risk has been traditionally used by regulators in setting capital requirement for market, credit, and operational risk. Regulators are switching to estimated shortfall for market risk capital. तो कितना हमारा पैसा कम हो सकता है, that is what they are looking at. So for example, fund XYZ has a daily variance of 1 million at 95 confidence. That means there is 95 confidence that daily loss will not exceed 1 million. 95 or times daily loss will be less than 1 million. 95% of the times daily loss will be 1 million, and there is still a 5% chance that the daily loss will be more than 1 million. So over a sample of 100 days, daily loss will be less than 1 million on 95 days. So this is a probability. They're calculating the probability. So various ways of value at risk calculation. Then you can look at the loss horizon. कितने दिन का है, daily, weekly, monthly. या look back period. पिछले एक साल में, पिछले 2 साल में क्या हुआ है, या confidence level 95%, 97% or 99%. Obviously 99% would give you more confidence, because 99% of the time in the earlier example, if you look at, your loss will be less than 1 million. Only 1% is the chance that your loss would be more than 1 million. So computed on premise that history will hold in future, uses imperial distribution, historic returns are generally equally distributed. So ये सारे you can say assumptions हैं, and these assumptions might not be true in future. So these calculations are required to give you a rough idea of the risk. So ये हम देख चुके हैं. Historic simulation uses historic analysis of the portfolio risk values to estimate its risk exposure in future, compute historical returns over the look back period, compute simulated levels using historical return and base price, computes PL as difference between historic and base simulated level, derive percentile loss based on confidence level. Then analytical approach assumes that portfolio returns are normally distributed and uses the volatility of the returns to plot the graph. So मतलब normal distribution मतलब equal है. तो यहाँ पे अगर आप देखो, so this is negative and this is positive. So the worst 5% of the curve is used instead of the historic return. It's also known the variance or the covariance method. Now, value at risk का फायदा क्या है? So we have seen that senior management wants to know how bad things can get. कितना नुकसान हो सकता है, maximum कितना नुकसान हो सकता है, and that is calculated in the value at risk. So consequences when VAR is used to place risk limits on traders. तो फिर जो ट्रेडर्स होंगे उनको दे दिया जाएगा ना कि दिस इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं, मतलब इससे ज्यादा लॉस होगा देन स्टॉप द ट्रेडिंग या व्हाटएवर, राइट? सो देन इट विल लीड टू अनडिजायरेबल रिजल्ट्स. Traders like taking, obviously traders will take high risk. We have seen there is a direct relationship between risk and return.
higher the risk, higher would be the return. So trader like to take risk, but if you put a what to say, a bar on the risk they can take, obviously the returns will be affected. However, there are also ways to circumvent the rules. So John Hull, probably one of the traders in his risk management at National Institute book, quotes from a trader, "I've never met a risk control system that I cannot trade around." So we know that traders take high risk for better returns, and there can be loopholes for managing those risks. So let us look at as an example. Suppose that a bank tells a trader that one day 99% variance of trader's portfolio must be limited to 10 million. So trader can construct a portfolio where there is 99.1 chance that the daily loss is less than 10 million and 0.9 chance that is 500 million. So trader is satisfying risk limit imposed by bank, but is clearly taking unexpected risk. So for example, writing out of money options in a strategy. Okay, ये तो समझने के लिए आपको options पूरी तरह से समझ, derivatives पूरी तरह से समझना चाहिए. But out of money basically means like when the strike price is less than the market price. अभी strike price आपको कुछ याद है derivative का? Anyway, strike price is the price at which the buyer and the seller have agreed to settle the trade. Right? So basically it means that there are also ways of taking more risk than prescribed by the value at risk model. Then you can look at expected shortfall. It talks about if things get bad, how bad and what is the worst expected loss. Also called conditional value at risk, condition tail expectation or expected tail loss. Expected shortfall like value at risk is dependent on similar parameters: look back, term horizon and confidence level. So expected shortfall is expected loss during time t conditional on the loss being greater than x percentile of probability distribution of losses. So ये सारी चीजें जो है statistical tools है, statistics है, a calculation to see what is the maximum you can lose. So for example, if x is 99, t is 10 and the variance is 70 million, expected shortfall in average amount of loss over 10-day period is less than 70 million or greater than 70 million, sorry. Expected shortfall has better properties than value at risk because it gives a sense of worst possible loss. However, it is not as simple at value at risk, more difficult to understand, more difficult to backtest a procedure for calculating expected shortfall than procedure for calculating value at risk. So two parameters it takes: time horizon and confidence level. Also, it assumes that change in portfolio value at time horizon is normal distributed. Loss in portfolio value mean is equal to 0 for relatively short time horizon. So ये सब, I don't know if you need to know. So I'm not, this will confuse you even more, so I'm not covering it. So basically, if you look at, just to sum what we have seen to manage the risk, portfolio managers look at value at risk or estimated loss. Now to calculate value at risk, you have two ways, rather three ways: the historic simulation or the analytic method and the Monte Carlo method. Different formulas for that.
Then we can look at marginal and incremental value at risk. Incremental value at risk is an additive version of value at risk, suggesting the value at risk contribution to each security of the portfolio value at risk, because different securities will have different risks. It is also interpreted as change in portfolio value at risk for 1% change in individual position exposure. Exposure in financial terms means buying that security. So marginal value at risk measures the change in portfolio value at risk for as a result of removal of position from the portfolio. So value of risk आपने calculate करिए, फिर उसका back testing करना है. Back testing in the sense, is it following that pattern or not? So the practice of comparing the actual daily trading exposure to previously predicted value at risk figures. तो आपने predict पहले you've calculated, then you are checking it कि ये सही था कि नहीं था. So actually daily trading exposure versus previously predicted value at risk figures. So it is a test of reliability of value at risk methodology, ensures that approaches of sufficient quality performed on a daily basis by financial reporting function. If unsatisfactory, difference between reality and estimation are found, and the VAR model must be revised. So एक बार आपने calculate कर लिया, फिर आप check कर रहे हो कि whether it is following that pattern or not. So it's important check a reality check for a risk measure. How well the current procedure for calculating risk measure would have worked in the past. Value at risk easier to backtest than estimated shortfall. And regulators have been reluctant to switch from value at risk to estimated shortfall for market risk. Estimated shortfall for regulatory capital जो पैसा आपको अपने पास रखना है, तो हमने देखा है ना, SEBI tells various entities that this much money you should keep. RBI also tells the bank about the capital. So estimated shortfall would be related to the capital कि आपके पास अगर आपका इतना shortfall है, तो to meet that shortfall you need to have that capital. And VAR estimates for backtesting. So for that backtesting, you calculate 1 day 99% variance. Backtesting how often loss or in a 1 day is more than 1 day 99% variance. Days when actual loss happen greater than VAR for expectation. If expectation happens on 1% of the day, reasonably comfortable with current methodology for calculating VAR. So basically you've calculated with VAR, you will test whether it is holding true. If it is holding true, probably it is a good method. If expectation happens 7% of days, methodology is suspected. Value at risk is underestimated. And the regulatory capital perspective. So if the capital calculated is too low, अगर आपका estimated risk कम है, तो आपका जो required capital है, that will also be low. So if expectation happened 0.3% of days, value at risk is overestimated, and therefore you will have to keep more capital. One issue in back testing in 1 day variance, value at risk, changes made in portfolio during the day. There are two possibilities. Compare value at risk with hypothetical changes in portfolio value. Compare value at risk to actual change in portfolio value during the day. And obviously we are interested in that. We are basically interested to know how much money we can lose. So this is a graphical representation of the same.
So basically, portfolio managers are supposed to review it to see what are the risks they are taking for the return they want to generate. So managers often view risk measure across various time horizon. So आपने देखा होगा ना, सुना मतलब कि ट्रेडर्स जो है सुबह से शाम बैठे रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि जस्ट बैठे रहते हैं, ये सारी चीजें भी देखते हैं. दैट इज व्हाट सी. तो उनका कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है तो हिज intention would be to generate the maximum return without taking the maximum risk, right? So that is what he will look at, how he can manage risk. So this is important. No, okay, so वो सारे calculations है वो हम नहीं देखेंगे, but risk mitigation. Now risk mitigation हमको कस्टमर के पोर्टफोलियो के हिसाब से करना है. ऑब्वियसली वी आर नॉट पोर्टफोलियो मैनेजर्स, तो हम पोर्टफोलियो का रिस्क एज सच नहीं, बट कस्टमर के लिए we'll have to do the risk mitigation. So risk mitigation के कुछ चीजें हमने देखी है म्यूचुअल फंड में. व्हाट आर द वेज ऑफ मिटिगेटिंग रिस्क? हाउ डू यू मिटिगेट रिस्क और हाउ डू यू रिड्यूस द रिस्क? एनीवन? कैसे रिड्यूस कर सकते? सम वेज ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क. ईस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी. ईस्टर्न तुम गुवाहाटी होगा. वही तो मुझे बोलने, लेकिन लिखते थे यार कुछ क्रॉस कन्वर्सेशन चल रहा है. सौम्या, यस मैम. मैम मुझे लगा पहले गुवाहाटी का आंसर कहाँ से हो गया. Anyways, बताओ क्या तरीके हैं? मीनाक्षी, mute your mic please. Yeah, thank you. अरे सर्च कर लो वैसे भी. 1 मिनट. मैम मीनाक्षी गुवाहाटी पहुंच गई है, हमें लग रहा है. मीनाक्षी, नॉर्दर्न कमांड. एनीवेज अच्छा बताओ, कौन बताएगा क्या है रिस्क मिटिगेशन के मेथड्स? डाइवर्सिफिकेशन है, करेक्ट. और एक ऑप्शन है उधर. हाँ है. हम लोग श्रीनगर ही खरीदे और जाना ना जनरली वहाँ. right, hedging is protecting. Hedging is you know you try to protect. Yeah, you take assets which are not very correlated. So standard deviation and value and at risk and stress test analysis have given signs of health of portfolio on a regular basis. Portfolio manager's objective is to use this analysis such that portfolio is optimized in terms of return and risk. Diversifying investment across various securities and asset classes to reduce concentration of risk. हम देखते आए हैं. Lower the correlation between stocks in the portfolio, higher the diversification benefit. Note that diversification can only help to reduce, and this we have seen, unsystematic risk arising from the stock or company. Market related risk cannot be diversified. Hedging is basically taking a contrary position. कहीं आपने buy किया तो कहीं आपने sell कर दिया. So you are hedging or you're trying to reduce that risk. So hedging, in addition to diversification, manager has to undertake hedging decisions to manage portfolio risk. Investors should focus on portfolio of asset and not individual assets. तो ये हमने देखा कि एक ही टाइप के assets अगर आप लेंगे तो आपका रिस्क इंक्रीज होता है. Maximize portfolio expected return for a given amount of portfolio risk. Minimize risk for a given level of expected return. ये तो हम देखते ही आए हैं. Don't keep all your eggs in one basket. You have to use different kind of assets. So I think we will take a break here.
and let's get back by 2:45. Okay, so we are breaking and we'll get back at 2:45.